Now let's understand Kumaon. It lies in Uttarakhand and extend from Satluj to Kali or Mahakali river. Okay. So it is the geographical extension between these two rivers. The land between these two rivers, or the part of Himalayas between the two rivers, identified by Sidney Burrard as a Kumaon Himalayas. Now here the Lesser Himalayas, which we also called the Middle Himalayas or Himachal, okay. Lesser Himalaya is also known as what? The Middle or Himalayas or Himachal, in the Kumaon region, represented by which ranges? वहां लेशर हिमालय की रेंजेस को कहते हो मसूरी रेंज, ओके, नागतीबा। ये नागतीबा और मसूरी किसके नेम हैं? लेशर हिमालय के ही नाम है, लोकल। वहां लोकली पीपल क्या बोलते हैं? मसूरी, नागतीबा। तो मसूरी एंड नागतीबा रेंजेस आपको कहाँ दिखाई देंगे? उत्तराखंड रीजन में, है ना। मसूरी आप जगह भी जानते हो, देहरादून अराउंड। So basically the Mashuri and Nagtiba. So you have to demarcate this region, you have to show that region, the Mashuri and this. Now when you look at the Sivalik, ये तो लेशर हिमालय की बात कर ली कि लेशर हिमालय रेंजेस आपको दिखाई देंगे उत्तराखंड में, और उनको वहाँ लोग किस नेम से बुलाते हैं? बोला मसूरी रेंजेस, नागतीबा रेंजेस, इसके नाम से बुलाते हैं, ओके, लोकली। वो ऑफशूट है, वो उसके ब्रांचेस है। फिर शिवालिक आउटर हिमालय भी दिखाई देगा आपको कुमाऊं रीजन में, यानी उत्तराखंड रीजन में। तो यहाँ लिखा है द शिवालिक इन द रीजन रन साउथ ऑफ द मसूरी रेंज। मसूरी इज द पार्ट ऑफ लेशर हिमालय, तो लेशर हिमालय के साउथ में ही शिवालिक मिलेगा ना आपको, ठीक है ना। बिटवीन द गंगा एंड द यमुना रिवर, वेयर द शिवालिक लाइज? बिटवीन गंगा एंड यमुना, ओके, साउथ टू द मसूरी, ओके। अब देखो, यानी दो रेंजेस हैं। एक रेंज हो गई लेशर हिमालय की जो दिखाई दे रही है आपको, एक आपको आउटर हिमालय की शिवालिक की दिखाई दे रही है ना। तो इन दोनों माउंटेन के बीच में, से फॉर एग्जांपल हियर देयर इज अ मिडिल हिमालय और लेशर हिमालय, एंड द मिडिल हिमालय एंड लेशर हिमालय are known as here the Mashuri and Nagtiba, and another one is the Shivalik. In between both these rivers, अब यहाँ से rivers originate हो रही हैं और originate होकर आ रही, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया? सामने में माउंटेन आया तो रिवर्स यहाँ ब्लॉक हुई, टेम्परेरी ब्लॉक हुई, तो यहाँ रिजर्वायर बनाया तो यहाँ सेडिमेंट भी है। जब इस माउंटेन शिवालिक को कट करके पानी आगे आया तो यहाँ से सेडिमेंट को इसने, नदी ने यहीं पे डिपॉजिट कर दिया। ये लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट यहाँ भी दून्स कहलाती हैं, जैसे अभी बताया अंकुर ने देहरादून, ओके। सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर in this, that flat valley between the Lesser Himalaya, what I have mentioned, that the flat valley between the Lesser Himalaya and Shivalik ranges are called dunes. So what are dunes? Dunes are lacustrine deposit, okay. For example, I had mentioned that Dehradun or Patli Dun or Kotli Dun, all these dunes region are the lacustrine deposit between two ranges. What two ranges? The Lesser Himalayan ranges and Shivalik, okay. So what you have to demarcate here is, once you look at कैसे demarcate करोगे, यहाँ पर आप बनाएंगे ये, ठीक है। ये क्या है? ये रेंजेस है मसूरी, and this is Nagtiba, okay. These ranges are the ranges of Lesser Himalayas, okay. Now there is Shivalik also,
And in between this ranges and Shivalik there is a region which we called dunes. इनके बीच में जो lacustrine deposit हैं we call that dunes. Okay. It is known as dune. Now, again, in this region was notoriously known for the Jhuming cultivation earlier. That's why in Uttarakhand Chipko movement begins. Okay. So why this in this region Chipko movement begins? Because the people used to practice Jhuming cultivation, the native people or native tribe of this region. Okay. So let's again understand the feature. तो यहाँ तक बात समझ आ गई कुमाऊं में. अब आगे चलें, नेपाल के बारे में पढ़ें. तो यहाँ क्या है, प्रैक्टिस झूमिंग की, जिसके कारण मैंने कहा चिपको मूवमेंट. एंड आफ्टर चिपको मूवमेंट झूमिंग कल्टीवेशन वहाँ कम हुआ. द पीपल यूज टू प्रैक्टिस व्हाट, द ऑर्चर्ड फार्मिंग in Uttarakhand region also, as well as some agricultural activity is also going on in the lacustrine deposit in Doon region. Basically the people cultivates in the rabi crops, especially the wheat and barley, as well as on the foothills they also practice the stair or step farmings. सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, पहाड़ों पर को काट करके पैडी कल्टीवेशन भी करते हैं. ओके. कश्मीर रीजन में बासमती राइस भी होता है. in Karewa deposits the people also practice the basmati rice. in Jammu Kashmir, in Punjab Himalayas. Okay. तो इस रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने कहा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, ऑर्चर्ड फार्मिंग्स करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, और साथ ही साथ फुटहिल्स के ऊपर सीरियल्स भी लगाते हैं, रबी और खरीफ, स्पेशली रबी व्हीट एंड बार्ली, और खरीफ में पैडी कल्टीवेशन करते हैं. है ना, समझ आ गई बातें. नेक्स्ट चलेंगे. नेपाल हिमालयस lies between the Mahakali river and Tista river. The range of Himalaya is known as Nepal Himalayas. Locally, regional division. 800 kilometer stretch between the Kali in the west and the river Tista in the east. Okay, the region is demarcated by Sydney Burrard as a Nepal Himalaya. Okay, here the Great Himalaya ranges having the highest peak. The Mount Everest lies in Greater Himalayas. नेपाल में ही है ना, तो यहाँ नेपाल का मैप देखिए, उसमें मार्क करिए पिक्स, माउंट एवरेस्ट, एंड एज यू नो इन द सिक्किम रीजन कंचनजंगा. ओके. मकालू इन नेपाल रीजन, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, धौलागिरी. all these mountain peaks you can demarcate. The heights is 8,000 meter, around 8,000 meter. Okay, sub peaks are more than 8,000 meter. So these are the highest relief features. The highest relief feature of the world is lies in this region, in the Greater Himalayan belt of the Nepal. Okay, the loftiest peak. These are the name of the peaks. Okay. Now here the Lesser Himalaya, when I was discussing yesterday the Lesser Himalaya, what I have said that in Nepal the people called it what, Mahabharat range. वहाँ क्या नाम से जाना जाता है मिडिल हिमालय को, महाभारत रेंज या महाभारत लेक, LEKH. So the Nepal is called the Lesser Himalayas or the Middle Himalayas as Mahabharat range or Mahabharat lake, LEKH. Now when you look at, there are several rivers which originate from the Nepal Himalayan region, several rivers, and enter into the region of Uttar Pradesh and Bihar. Okay, and finally these are the tributaries of Ganga. Largely majority of the rivers forms the tributary of which river, the mighty Ganga. So the range is crossed by the river like Ghagra and Gandak, Koshi,
These are the major river. There are lots of river which originate in that region. Okay, but larger river आपने कहा, ठीक है. So घाघरा, शरयू, okay. Now Gandak, बूढ़ी गंडक, कोशी, and there are 7 headwaters of Kosi, Saptkoshi, Shunkoshi, Arun. All these rivers are originating from the Nepal Himalayas. Okay, crosses these ranges, cut these ranges. Okay, in between the greater and the lesser Himalayas, यहाँ पर भी वैलीज हैं इन दोनों के बीच में. आपको पता है ना, ग्रेटर और लेशर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, तो वहाँ भी वैली है, टेक्टोनिक रीजन है, वैली है, टेक्टोनिक वैली. नाम क्या है? काठमांडू वैली. ठीक है ना, काठमांडू वैली. सो इन बिटवीन द ग्रेट एंड द लेशर हिमालय इन द नेपाल रीजन, व्हाट वैली? काठमांडू. एंड पोखरा. पोखरा is a place which is again a very a famous tourist destination of Nepal. So Kathmandu and Pokhara is a lacustrine region. अब यहाँ भी रिवर ब्लॉक हुआ तो lacustrine डिपॉजिट बनाया. Okay, now the Sivalik ranges, okay, come very close to the lesser Himalaya in this region. Why? Because of anti-clockwise bend of the Indian plates. ओके, एंड हियर मैंने आपको बताया था कि आपको चूरिया हिल्स अभी आप देखेंगे, एंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट बियॉन्ड द नारायणी और द गंडक. गंडक इज ऑल्सो नोन एज नारायणी. गंडक के बियॉन्ड जो है शिवालिक पूरी तरह से चिपक गया है. किससे? मिडिल हिमालय से. सुनाई दे रहा है? सुन रहे हो? इधर उधर मत देखो, यहाँ देखो, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आता है. सुनो तो मैं जो बोल रहा हूँ. What I have said that here what happened, the lesser Himalayas and the Shivalik is क्या हो जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं, चिपक गए एक दूसरे से. कहाँ चिपक गए? बोला गंडक के बियॉन्ड. अब गंडक आपको कहाँ दिखाई देगा? एटलस में ढूंढो, गंडक दिख रहा है क्या आपको? तो वहां आपको क्या दिखाई देगा कि that after that reason the Gandak is also known as Narayani. Okay, so beyond that reason the lesser and the Shivalik ranges are close to each other. एकदम थैस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ईस्टर्न साइड में इंडियन प्लेट ने प्रेशर बिल्ड किया, जिसके कारण ये रेंजेस चिपक गई. ओके, तो अब इसे यहां दिखाएंगे आप इस डायग्राम्स में. मैंने क्या कहा? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये रेंज है ऐसे बनाया आपने. व्हाट इट इज लेशर हिमालयन रेंजेस, एंड इन द लेशर हिमालय रेंजेस हियर इट इज नोन एज महाभारत रेंज. महाभारत रेंज. महाभारत रेंज. ओके, नाउ व्हाट आई हैव सेड दैट हियर व्हेन यू लुक एट द शिवालिक, मैंने कहा शिवालिक आगे चलकर ये ऐसे और ये क्लोज आगे. ठीक है, द शिवालिक कम्स क्लोज टू दिस. What I have said that in between the Shivalik and the Mahabharat range is the lesser Himalayan ranges. Lesser Himalayan ranges. It is middle Himalaya का part है वो. ठीक है. In between that, what I have said, there is a lacustrine region. Lacustrine deposits हैं यहाँ पर, valleys है दोनों के बीच में. ठीक है. और अभी बात करेंगे
So why in the Kathmandu region few years back there was a intense earthquake appear? Because that is in tectonic valley. वो टेक्टोनिक रीजन है, फॉल्ट लाइन है, ठीक है ना, वहाँ रिवर फ्लो कर रही हैं, वैलीज बना दी, लेकिन नीचे रॉक्स वीक है और वहाँ पे फॉल्ट्स है, तो वहाँ एनर्जी लिबरेट हो सकती है, इसलिए वहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं हमेशा. दैट इज अ टेक्टोनिक बेल्ट इन हिमालयन रीजन. ओके, सो आई हैड मेंशन्ड अबाउट द नेपाल हिमालय स्ट्राइकिंग फीचर. तो आपने क्या देखा, दुनिया के सबसे ऊंचे पिक ग्रेटर हिमालय में लाई करते हैं यहाँ, ठीक है. तो ग्रेटर हिमालय के रेंजेस सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में आप यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ आप देखोगे देयर आर सर्टेन पिक्स विच आर द लॉफ्टीएस्ट पिक. ऐसा नहीं है, लेशर हिमालय के भी पिक्स हैं और शिवालिक के भी पिक्स हैं, ठीक है. यहाँ पर भी लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स है बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेशर हिमालय, बिटवीन द लेशर एंड शिवालिक ऑल्सो देयर इज अ लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट, ठीक है. तो मैंने बताया ग्रेटर हिमालय से फिर माउंट रिवर निकली, तो बीच में लेशर ने रोका कुछ समय के लिए, यहाँ डिपॉजिट तैयार किया. उस डिपॉजिट्स में भी वैलीज हैं, जो आप रिवर वैलीज हैं ना, वहीं डिपॉजिट तैयार करती हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, लेक, टेम्पररी लेक बनना, इसीलिए उस डिपॉजिट को लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. काठमांडू वैली, पोखरा वैली, ओके, ऑल दीज रिवर्स फॉर्म्स द वैलीज. So you have to mention the important peaks in this region, important relief features, okay, and that's why these peaks are source of revenues. टूरिज्म के लिए फेमस है ना, माउंट एवरेस्ट पे हर साल कितने सारे लोग जाते हैं, तो नेपाल की रेवेन्यूज जनरेट होती है टूरिज्म से. द हिमालय इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यूज, ओके. नॉट ओनली द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस, हिमालय का केवल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, ओके. इन दैट रीजन द वैली इज अ वेरी पिक्चर्स्क वैलीज. लोग काठमांडू घूमने जाते हैं उसकी सुंदरता देखने के लिए, उस वैली की, कश्मीर वैली जाते हैं उसकी सुंदरता देखने के लिए. तो दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द मिलियंस ऑफ टूरिज्म, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर्स, ओके. कोविड में क्राइसिस सभी जगह थी, यहाँ भी थी, ठीक है. बट अगेन, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ सेवरल रिवर्स which carried the fertile alluviums, okay, and formed the flood plains, especially in Bihar. यहाँ से रिवर जो निकलती हैं वो बिहार और यूपी में गैंगेटिक फ्लड प्लेन बना रही हैं. Again, having the economic significance because we are practicing agriculture in that. The Indians practicing agriculture in that region. Okay. When the rivers rejuvenated in Tarai belt having the humus-rich soil, I had discussed earlier, okay, when I was discussing the region of Tarai. So you have to understand the significance, no need to cram the facts, okay.